ये हमारी जन्मभूमि है, ये मेरा गांव है। बचपन से मैंने देखा यहाँ बहुत समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ बरसात के दिनों में कहीं आने जाने का रास्ता नहीं रहता था, जिसके चलते इस एरिया के तमाम मरीज लोग जो है इलाज के अभाव में उनका डेथ हो जाता था। बचपन के बाद ये दिमाग में बैठता चला गया कि यहाँ जो है चिकित्सा का बहुत अभाव है, डॉक्टरों की कमी है और कुछ शिक्षा भी यहाँ आवश्यक है इस गांव में। तो सौभाग्य से एक ये अवसर आया कि डॉक्टर्स फॉर यू एक संस्था आई, जिसने ये प्रस्ताव रखा कि हम इस गांव में कुछ करना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। शिक्षा का व्यवस्था हो जाए और चिकित्सा का व्यवस्था हो जाए तो बहुत भला हो सकता है इस गांव का। Patna, an ancient city in Bihar, is spread along the banks of the Ganges River. If you are here for the first time, Patna may seem chaotic. It's a confounding mix between old and new, impoverished regions and expanding modern construction. The vibrant density of this city begins to fade into scenic landscapes as I make a 19-mile journey from the city to the village of Masari. Its warm, fresh air, vast green fields, and calming silence are some of the most noticeable features of this place. I am here to visit a small health clinic, one struggling to meet the demand it faces, and to visit the beginnings of a much bigger project. वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I am here on behalf of the Vistex Foundation. It is our mission to invest in the development of reliable health systems in places where they are needed most. In 2018, we found a partner in Doctors for You, an organization focused on providing medical care to vulnerable communities throughout India. Dr. Ravikant Singh and his team have taken the lead in attacking the most challenging health issues in this region. मेरा नाम डॉक्टर अजीत रॉय है। जब DFY शुरू हुआ था उस समय से हम लोग साथ में काम करते थे। कुछ मोटिवेटेड डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हमारे देश में आते थे उसमें एक रिस्पांस टीम बनाई। तो ये सब शुरू हुआ 2008 में जब बिहार में कोसी डिज़ास्टर आया था। तो उस समय से ही हम सभी लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस समय हम लोग सारे मेडिकल इमरजेंसीज डील करते हैं, जैसे यहाँ गैस्ट्रोएंटेराइटिस काफ़ी आता है, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत हैं यहाँ। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ रूरल सर्जरीज़ भी करते हैं, जैसे हाइड्रोसील वगैरह, या फिर अगर एमरजेंसी सीजेरियन हो तो वो भी यहाँ पे किया जाता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमारे पास स्टाफ सफिशेंटली अवेलेबल नहीं रह पाता, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, हमको ऑपरेशन थिएटर किसी तरह से रन करना पड़ रहा है, एडमिशन के लिए स्पेस प्रॉपर नहीं है। तो ये कुछ चैलेंज हैं जिनको लेके हॉस्पिटल में काम चल रहा है।
Here we do our basic pathological test, bedside test. The special cases most of the time we have to refer outside, like some ultrasound or some radiological tests. So only the bedside test and even the basic diseases like malaria, filarias we can perform here. This area over here is this is for this kind of treatment. Minor procedures, like we have a crash cart. You can see the small trolley there. We have all the medicines and crash cart whatever we require. You can also call it as an injection or a minor dressing area. And near to that we have bed. We can also admit patients here. So like one of the patients, he's admitted here since one day. Your nurses here are almost all trained from the community? Yes. Many of them? They all are trained here. Okay. We can see the difference, like 3 years back, how they were just struggling and they don't know what to do, how to just take care of their family. But now we can see the vast difference in their families and the way they have built up their confidence level, built up their capacity. It's very good to see them as well. हम लोग सेंटर से आते हैं और गांव में घरे घरे जाके बोलते हैं क्या सैनिटरी पैड मिलेगा, और जहाँ पे मिलता है वहाँ जगह बता देते हैं और वो सारा लड़की यहाँ आ जाती है। घर में लड़की लोग कपड़ा यूज करती है, कहीं भी रखा हुआ है कपड़ा जैसे गंदगी, वो कपड़ा यूज करने से उसको इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए सैनिटरी पैड देते हैं। तो उसको अपना रखने के लिए भी बताते हैं कि सैनिटरी पैड कितना घंटा रखना चाहिए। पेपर में लपेटकर जलाना है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। अगर इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा पर्यावरण गंदा होगा, हमारा गांव गंदा होगा। अभी हम बांटे 84 लड़कियों को रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। जैसे कि अभी हम इन लोग से क्वेश्चन किए तो वो सारा बता रही है। पहले बहुत शर्माती थी, बात भी नहीं करती थी, जाते थे घर में बुलाने तो है नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब अब बदलाव बहुत अच्छी से हो गई है। हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन ना होना, ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है कि उस समाज का स्वास्थ्य कैसा है, या वहाँ पे हम लोग जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो कितनी बेहतरी से लोगों तक पहुँच पाता है। एक ऐसा यहाँ पे ढांचा बिहार में ख़ास तौर से और रूरल साइड में है, जिसमें कि एक मरीज़ जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो किसी नॉर्मल प्रैक्टिशनर जिसने किसी डॉक्टर के साथ रह के 1 महीना 2 महीना में कुछ सीख लिया हो, वो थोड़ी बहुत दवाइयाँ जानने लग जाता है और सबसे पहले मरीज़ उन्हीं के पास जाता है। उनको हम नॉर्मल भाषा में क्वैक्स कहते हैं और पहला एक्सपोजर पेशेंट का वहीं होता है। इससे पहले कोई दवाई ले रहे थे? दर्द की बेटा। दर्द का दवाई कौन दे रहा था आपको? गैस के। कहाँ से ले रहे थे दर्द का दवाई? फतुहा से। हाँ, फतुहा से। फतुहा से? हाँ। फतुहा में किस डॉक्टर के यहाँ से ले रहे थे? डॉक्टर है से ना। डॉक्टर से नहीं ले रहे थे? ना। दवाई की दुकान से ले रहे थे? हाँ, कोई मियाँ हुआ हो ना। वो लोग स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें एक अनकहे तरह से किसी भी अस्पताल पे या किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक बर्डन डालना शुरू कर देता है। तो अक्सर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इसी तरह ख़राब हुए केसेस होते हैं, जो शायद अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले आ गए होते तो हम उसको बहुत बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते थे। तो हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे। उसके लिए हम लोग रेगुलर ANC चेकअप करते हैं यहाँ। उसके बाद डिलीवरी के बाद का भी लगभग 6 महीना तक हम लोग उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। इन सब से जुड़ा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो है माल न्यूट्रिशन। यहाँ बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे खाने की कमी नहीं है, यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है, यहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी माल न्यूट्रिशन यहाँ एक समस्या है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। Mainly this ward we have kept for malnutrition. So they all are from our nearby villages. Per day, almost 20 children we try to cover. We screen them and we enroll them in our, if they are malnourished, we enroll them in our program and then we take care of them. So these all kids, these 4 kids especially, they all are malnourished. Now in our malnutrition program we have more than 100 children. About 20 to 30 children are severely malnourished. Apart from them, they are moderately, and some they are in the borderline. So they are quite better now.
सबसे ज़्यादा दम सूखल था और इसका पतला जैसा होता था। इसका पहले नहीं भूलता था, दम खूब सूखल था। जैसे इसका इलाज चलने लगा तगते गते बैठने उठने लगा। पहले का बच्चा सब उनका बच्चा सूखा सूखा रहता था, और जैसे जैसे अनाज धरता था वैसे से भूले उले लगता था, तब जाके ये सब अथी होता था। माल न्यूट्रिशन के बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होता है, फिज़िकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। ये सभी औरतों को समझ में नहीं आता, अमूमन समझ में नहीं आता। तो ये एजुकेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसको कि हम ज़रूर एड्रेस करना चाहते थे। तो इसलिए हम लोगों ने कम्युनिटी वर्क शुरू किया। हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस कैंप और स्क्रीनिंग शुरू किया। स्क्रीनिंग में हम लोग ये पता लगाते हैं कि सीवियरली माल नरिश कौन है और मॉडरेटली कौन है। उनकी चार्टिंग की जाती है, उनका ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है। So here we have organized a health camp, basically for malnutrition, a general health checkup, and also the ANC checkup. So we can follow. Okay. This is one of the many temporary health camps that Doctors for You operates throughout the region. Here, children and mothers can get checkups, and doctors can look for signs of malnutrition and other health risks that might have been preventable with regular care. This particular camp has stations set up in different areas to address different issues. The mothers here are often very young and need more than a simple prescription. And so the doctors and nurses must also be educators, counselors, and even big brothers and sisters, encouraging these young mothers to eat better, to take better care of themselves as they would their own children. The challenge here is to be persuasive and insistent while also being understanding and comforting. Local villagers also assist Doctors for You by providing space for these health camps in their homes. वो तो भगवान दिए हैं, इसलिए हम लोग जहाँ तक होता है भलाई के लिए करते हैं कि हम लोग का सवाल है कि आओ दें कि आओ जगह दे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब तक हैं तो सेवा के लिए तैयार रहते हैं कि ना जितना भला हो भला करना हो। पहले पकड़ के कहा जाता था, लेकिन अब होता है कि कब आ रहे हैं तो उससे पहले आदमी लाइन लगता है, इंतजार करता है, लाइन में लगे रहता है कि नहीं दिखा के जाएंगे। कल भी आए तो 10 को फिर नहीं हुआ तो फिर लेके गए वहाँ देख के फिर यहाँ भेजे तो लोग है कि ना बहुत खुश हो गए। खुश है तो दिखाने के लिए तो यहाँ पर डॉक्टर चाहिए ही यहाँ पर कि हर दिन इस दिन को आए देखें, इमरजेंसी हो तो उसको लिए सुविधा हो कि हवाई लेके जाएं। इमरजेंसी कोई सेवा हो तो इसके लिए तत्काल सेवा नहीं है, इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। चाहे अगम को जाइए, एक केरला कहीं हॉस्पिटल तो है अगम का पटना कि 10 बजे रात में 12 बजे रात में कभी हुआ लेके चल दिया। अब पटना जाने में तकलीफ है, गाड़ी है नहीं, सबके पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है। Over here I see nice houses, brick, and right across the way I see mud houses and much less room, much less living space. What's the situation with that? So the houses with brick wall and RCC structure, they are upper caste, middle or high income group family. But those with the mud houses, and they are from like the extremely poor community. We call them as a Musahar community. They belong to scheduled caste. मुसहर यह दलित समाज से आने वाले लोग जिनका मुख्य पेशा आज से कई 100 साल पहले मूसाहार, मूसा मतलब चूहा खाना, मूसाहार, बेसिकली इस पे डिपेंड करती थी ये जातियाँ, और उसी को हम लोग मुसहर बोलते हैं। कई कई जिलों में उसको भुइयाँ बोलते हैं, कहीं पहाड़ियाँ बोलते हैं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और पढ़ाई की व्यवस्था, कुपोषण की व्यवस्था, कुपोषण इसका एक मुख्य कारण रहा है जिसके चलते मानसिक और शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास, उनका जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। पहले से करीब 25-30 वर्षों में आज़ादी के बाद उसमें अंतर है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं है।
This is my idea, to bring everyone, not only Doctors for You, other partner, local bodies and officials to work together and bring their attention on these issues. We need one big hospital where we can manage minor to major illness, and one of the big costs they have to pay from their pocket is for their health needs. So any emergency they have to either sell their land or sell their animal or jewelry, or these stories are very common, not only among Musar community but even relatively well-to-do families also. Right. One surgery is good enough to make them below poverty line. निश्चित तौर पे अगर एक अच्छा अस्पताल बनता है तो सबसे पहला स्टेटमेंट समाज में ये जाता है कि बड़ा अस्पताल बन रहा है, एक विश्वास ज़रूर पैदा होता है लोगों का। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास फिर इन चीज़ों के लिए जगह भी होगी, हम लोग ट्रेनिंग भी कर पाएंगे, हम लोग लेक्चर्स भी ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वार्ड अच्छे होंगे, बेहतर ऑपरेशन थिएटर कंडीशंस भी दे पाएंगे। जैसे स्टेरिलाइजेशन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, इंस्ट्रूमेंट्स का रख रखाव, ऑपरेशन थिएटर का रख रखाव। तो अगर एक अच्छा ऑपरेटिंग कंडीशंस मिल जाते हैं, अच्छी बिल्डिंग होगी, वहाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प करेगा। एक ऐसा वाकया भी हुआ, वो मेरे साथ भी एक हादसा हुआ कि एक मेरा बेटा भी इलाज के अभाव में डेथ कर गया। बाद में ऐसा मेरे दिल में था ये बात कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम इस संबंध में कुछ काम करेंगे। तो डॉक्टर्स फॉर यू ने ये प्लेटफार्म दिया, तो उसके पास बड़ा अस्पताल खोलने का कोई जगह नहीं था, तो हमने कहा कि ठीक है, ये हमारे पास ज़मीन है और हम उसी भावना में ये हम अपना ज़मीन डोनेट कर दिया। I'm pretty sure that the work which we are doing, if we keep continuing it for next 5 to 10 years, you will see the change. How many square feet is this area here? This roughly? area is more than 30,000 square feet area. 30,000. Can easily go up to ground plus 4. It's a very strong structure, and in initial phase 1 we are trying to build a ground floor and the first floor. Yep. We are trying to have at least 50 beds in this hospital, and later on, once when we complete the project, maybe over next 2-3 years, then it will go up to more than 250 beds hospital. Today, 2 years of planning and hard work is rewarded when I see the newly built hospital create a lot of excitement and optimism in this community. It is an important day in this region of Bihar, and leaders in health and government join the inauguration to make this point clear. On this trip, I am joined by the president of the Vistex Foundation, Sanjay Shah. His vision for this project has been one of a sustainable and replicable healthcare network, one that unites facilities like this one with community healthcare workers, nonprofits, governments, and donors around the world. Hundreds of people have come from long distances to commemorate this day. To them, this is more than a new building. It is a promise. A promise that leaders in India and throughout the world see them, hear their voices, and understand their struggle. A promise to take action. इस अस्पताल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप समस्त ग्रामवासियों को मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
मुझे खुशी हो रही है कि संजय शाह जी जिन्होंने इस अस्पताल खोलने का इस जमीन पर निश्चय किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इस बिहार की भूमि पर आप समस्त आए हुए प्रवासियों का हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। It's not just enough to erect a facility, it's even more challenging, I believe, to actually run it and run it in an organized fashion. In that respect, from whatever I've seen, I believe that Doctors for You, and especially Dr. Ravikant and his team, are some of the most selfless people I have ever met. And not only selfless, they're very energetic and passionate about this. I mean, they truly believe in serving these people, and people that have nothing but just hope. Today kind of validated that in many respects. I was able to see firsthand, the people that this was going to serve, the conditions in which they live, and I think the care that this hospital will provide them will really help break, in many respects, the vicious circle that they live in. I think hope is the magical four-letter word that the folks around here have probably come to rely on, at least when it comes to their health and the health of their children and their loved ones. But I think this is just the beginning. As we've seen, the structure is up, but a lot of the rooms are still empty. We have to get the equipment and everything else that we need to get this into a fully functioning hospital. So that's what I'm looking forward to next. I will admit that despite the joy of the hospital's opening, I feel anxious about the future. It is hard to imagine how a child born into such poverty, born into malnutrition, is going to get a shot at something bigger. But perhaps there is hope. One of the places I have been fortunate to visit is this learning center, which is also managed by the team of Doctors for You. Here, I see kids that could fit in anywhere. I see curious, kind, silly, and energetic kids. Even amid these difficult circumstances, they are learning. Learning English, math, science, and computers. They are learning to express themselves and build dreams. There is no one donation, one philanthropic act that will change the lives of these kids. There is no one person who, alone, can save them from every disease. Everyone I've met here tries hard to work towards those ends. But these are big generational tasks, and it will be these kids who achieve them. We can, however, do our part to correct the mistakes of the past. We can, one by one, eliminate the barriers that have been there too long, so that they might find happiness and success in their lives.